Seventh question. 100-watt sodium lamp radiates energy uniformly in one directions. The lamp is located at the center of a large sphere that absorbs all the sodium light which is incident in. The wavelength of the sodium light is 589 nanometer. So, तुम्हारे पास क्या जानकारी है? First is power is 100 watt. Second is wavelength is 589 nanometer. So 589 into 10 raised to minus 9 meter. The question asked is, what is the energy per photon associated with sodium light? Energy per photon. Energy per photon. And second, at what rate are photons delivered to the sphere? So rate at which photons are delivered to sphere. So n is how much? ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होगा. See, पहले चाहिए एनर्जी पर फोटोन. So that is hf, that is hc by lambda. So straight away solve कर दो. 6.625, 10 raised to minus 34, 3 into 10 raised to 8. Visible. So the screen not visible. Yes, please. Screen visible है ना? अब screen visible है. चलो solve करो. 6.625 into 3 upon 5.89. Roughly वो 20 होता है. So ये 4 point something आएगा. या 3 point आएगा. 3 point something. Yes. Solve it with calculator and give me the answer. Yati sir, is my voice visible? Voice audible? Screen visible? Give feedback. Audio clarity, screen clarity बनने. Okay. So voice is audible and screen is visible. तो ये solve करके मुझे आंसर दो.
Give reply on chat. Give reply by voice on the same device where video is connected, audio is connected. Yes. What is the answer? As the additional step here, you should do calculation in EV also. So 2 point something EV answer आएगा. Give the answer. Sir, 2.1 EV. 2.1. Okay. And जो second part का answer है, so N will be P upon E. So this would be 100 watt divided by ये watt है, so joule per second और यहाँ पे नीचे joule. So ultimately हमारा N का आंसर आ जाएगा per second में something into 10⁻19 per second. ये solve करो 100 upon 3.374. हंड्रेड अपन 425 होता है, ये 3.374 है. थर्टी थ्री 34 के रेंज में कुछ होगा. ट्वेंटी 29.63 आया. ठीक है, चलो. हाँ 33 होता है तो 3 आएगा. ये 33 से बड़ा है तो 29.6 बराबर है. एब्सोल्युटली परफेक्ट. ये आ गया आंसर. इजी सम 7th हो गया. कंफर्म इट प्लीज. कंप्लीटेड द क्वेश्चन. आंसर भी मैच हो गया. चेक करो.
कोई मेथड में वेरिएशन है? Then we move on to next question. What is given in 11.8? Check करो. Threshold frequency for certain metal is 3.3 into 10 to 14 hertz. So 50 is 3.3 into 10 to 14 hertz. 8.2 into 10 to 4 hertz. And we have to find stopping potential. So formula ऐसा होगा, Kmax is HF minus HF0. Now this was threshold frequency. मैंने symbol गलत लिख दिया है, मैं correct कर लेता हूँ. It is not work function, it is threshold frequency. So it is F minus F0. So this is 6.625 into 10 to minus 34. Into 10 raised to minus 34 into 4.9 into 10 raised to 14. फिर हमको तो V0 चाहिए. So 6.625 into 4.9 into 10 raised to minus 20 divided by E का value 1.6 into 10 raised to minus 19. Simplify करो and give the answer. Yes, please. So simple, straightforward question. और ऐसा भी कर सकते थे कि पहले आंसर इतना जूल में लेके आओ. देखो यहाँ तक जो सॉल्व होगा ना, सी है यहाँ तक, ये जूल में आंसर आएगा. So you get the answer something into 10 raised to minus 20 joule. EV0 का आंसर. So V0 is that joule divided by 1.6 into 10 raised to minus 19. That is coulomb. करो सॉल्व. क्या आंसर आता है इधर? 6.62 into 4.9. बोलो. Yes, please. क्या है आंसर? पहले 32.46 था. ओके, वेरी गुड. यहाँ पे 32.46 आता है और फिर उसको हम डिवाइड करते हैं 1.6 से. सो V0 का आंसर आया 20.28 वोल्ट. चेक करो ये आंसर भी बराबर है. Yes, students, confirm it, please.
So 7 हो गया, 8 हो गया. Yes, further. Yes, please. See, stopping potential होगा तो उसका यूनिट वोल्ट होगा. It will not be EV. सर हाँ बोलो. सर एक डेसिमल बाकी है ना, वो -20 अपन -19 है, तो एक 10 बचेगा ना डिवाइड में, तो 2 पॉइंट हो जाएगा ना. हाँ तो 2.0. हाँ बराबर है. यू आर राइट, यू आर राइट, यू आर राइट. ये मैं करेक्शन कर देता हूँ. बराबर है. तो 2.028 वोल्ट परफेक्ट है, क्योंकि वो डिवीजन करेंगे तो 20 आएगा, बट इंटू 10⁻⁻1 आएगा. बराबर है. परफेक्ट आंसर. चलो, दैट वाज अ वैलिड पॉइंट. चलो, हाँ इसको राउंड अप करके 2.3 भी कर सकते हो. डिपेंड व्हाट यू डन इज राइट. 2.08 को राउंड अप करके 2.03 कर दो, एंड दैट विल बी इन वोल्ट. So that completes question number 8. 7 हो गया, 8 हो गया. Now 9. कंफर्म करो सब लोग, समझ में आया? Now see ninth question. Work function is 4.2 eV. Will this metal give photoelectric emission for incident radiation of wavelength 330 nanometer? तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. So ninth question में work function is 4.2 eV. That's it. Now what is the question asked? Question asked is, there is a incident wavelength of 330 nanometer, lambda equal to 330 nanometer, and question asked is, so will there be photoelectric emission? So आप पहले फाइंड करो यहाँ पे एनर्जी ऑफ फोटोन, और वो अगर वर्क फंक्शन से कम है कि ज्यादा, दैट विल हेल्प अस टू डिसाइड. सो इट इज E इक्वल टू hc बाय लैम्बडा. इस तरह से सॉल्व करोगे तो आपका आंसर जूल में आएगा. हमको तो ईवी में चाहिए. सो hc अपॉन ई लैम्बडा, तो जो कि ईवी में आएगा. ईवी में आएगा तो हम इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं. देखो इधर ये हमको वर्क फंक्शन भी ईवी में ही चाहिए. वर्क फंक्शन ईवी में है तो हमको एनर्जी भी फोटोन का ईवी में ही कैलकुलेट करना पड़ेगा. So now put the values. Will be 3.30 into 10 raised to minus 7 meter. 6.625 into 10 raised to minus 34. 1.6 into 10 raised to minus 19. 3.3 into 10 raised to minus 7. And then that unit would be EV. So number and power जुदा करो. 6.625, 3, 1.6, 3.3. और ये बाजू पावर में -34 + 8 + 19 + 7. तो मस्त एडजस्टमेंट हो गया.
करो सॉल्व. मेन एस्पेक्ट इसकी क्या हुआ, आंसर 4.2 से बड़ा आता है कि छोटा आता है. मुझे जहां तक लगता है इसमें आंसर हमारा आएगा दैट विल बी 3 point something ev. Yes, I think Harshil is first to give answer. Let me check. Anybody else has given? Devanshi has given answer. Harshil, Devanshi, Hani Arora. These three people have given answer, and their answer is correct. Absolutely. तीनों का आंसर सही है. So this answer is 3.76 ev. And then you have to write down this note that energy is less than work function. So you can say condition fulfill नहीं होगा. So photoelectric emission does not take place. Photoelectric emission does not take place. अच्छा चलो इसमें एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं पूछता हूँ. Let me see who gets the answer. Extra question. What is the minimum wavelength required? What is the minimum wavelength required? कोई कैलकुलेट करके बताएगा? राइट डाउन दिस 9th, और जिनका 9th हो गया है वो मेरा एक्स्ट्रा वाला क्वेश्चन ट्राई करो. What is the minimum wavelength required? Okay, somebody has given the answer for minimum wavelength. कौन है जवाब दो मुझे? It's Harshil. According to Harshil, it is 295 nanometer. Let us check others के आंसर आते हैं कि नहीं. फिर मैं सॉल्व करके. Okay. Somebody else also got the answers to 96 nanometer. Both answers are close, so it seems both are correct. Yes. चलो उसके लिए मेथड क्या होगा? तो मेथड बहुत सिंपल होगा. If I0 is given in EV, so that will be HC upon E lambda 0. So हमको चाहिए lambda 0.
So hc upon e phi 0. So simply ये solve कर दो. 6.6 एक ही step में. करो complete. Yes. क्या था? इसी तरह से किया है आपने? ओके. चलो अभी हमारे ये क्वेश्चंस हो गए हैं 9b. नाउ 10. What is 10th question? क्या given है? Light of frequency. 10th question में frequency is 7.21 into 10 raised to 14 hertz. And Vmax of electron is 6 into 10 raised to 5 meter per second. What is the threshold frequency? F0 क्या होगा? So 10th question. Can any one of you explain me the method? अगर समझ में आया है तो anybody would like to try? नो वॉलंटियर तो मैं समझाता हूँ. पे टेंशन है. यदि सर कंफर्म कर जो वॉइस ऑडिबल છે ને લોકોને જવાબ નથી આવતો એટલે ડાઉટ જાય. યસ પ્લીઝ સર. पे टेंशन. Yes students, see here, I am explaining it. Use Einstein's basic explanation relation. Kmax is equal to E minus phi 0. Get both the answers in joule. So you will get work function answer in joule. And then we'll be able to get the answer for x half
करो solve. Get the answer. So this will be 36 into 9.1 divided by 2. And 10 raised to minus 31 plus 10. M is mass of electron. And we want E answer also in joule. So it is E is hc by lambda in joule. So it is 6.625 into 10 raised to minus 34, 3 into 10 raised to 8 divided by, sorry, wavelength नहीं, यहाँ पर तो frequency given है. So straight away HF से ही कर दो. hc by lambda की भी जरूरत नहीं है. E is HF. So 6.625, 10 raised to minus 34, 7.21 into 10 raised to 14, and that will be joule. आगे का आंसर 163.8 आया, ऐसा किसी ने बताया. अभी इसको सॉल्व कर दो. 47.76 so 47.76 into 10 raised to minus 20 joule. तो दोनों को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो. स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा होता है 19 में. दिस विल बी 1.638 into 10 raised to minus 19 joule. This will be 4.776 into 10 raised to minus 19 joule. So now you know ये relation है Kmax is equal to E minus phi 0. तो phi 0 क्या होगा? That will be E minus Kmax. इन दोनों जूल में ही है. So now phi 0 is E minus Kmax. So 4.776 into 10 raised to minus 19 minus 1.638 into 10 raised to minus 19. So get the answer. Phi 0 is 3.138. ये phi 0 आ गया. हमको क्या चाहिए? हमको तो f0 चाहिए. So उसके बाद यूज करो रिलेशन. Phi 0 is hf0. So f0 is phi 0 by h. So it is 3.138 into 10 raised to minus 19 divided by Planck's constant का वैल्यू. यस सॉल्व करो. 0.4735 into 10 raised to 15 and 1 upon second आएगा. So final answer f0 का आएगा 4.735 into 10 raised to 14 hertz.
यस प्लीज। क्या हुआ आंसर समझ में आ गया? यस 4.735 इंटू 10⁻14। परफेक्ट परफेक्ट, चलो बहुत अच्छी बात है। Now, next question. 11. Light of wavelength 488 nanometers produced by argon laser used in photoelectric effect. So lambda is 488 nanometer, which is 4.88 into 10 raised to minus 7 meter. The stopping potential is found to be 0.38 volt. Question as this: find the work function of metal. Work function आंसर ईवी में होता है यूजुअली, जूल में या ईवी में, बट विल टेक इट इन ईवी। तो इसके लिए फिर से जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन, गेट द लॉजिक क्लियर। जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन, kmax is equal to e minus 50. Get this answer in EV, get this answer in EV. So दोनों आंसर आपके पास ईवी में आ जाएंगे, तो आप 50 का आंसर भी ईवी में फाइंड कर सकते हो। So kmax, that is EV0. So that is 0.38 volt है, तो make it straight away 0.38 EV हो गया, खत्म। E equal to HC by E lambda, 6.625 into 10 raised to minus 34 into 3 into 10 raised to 8 divided by 1.6 into 10 raised to minus 17, 4.88 plus minus 6.625 into 3, 1.6, 4.88, and यहाँ पे पावर में 10 raised to minus 34 plus 8 plus 19 plus 7, and that will be EV. So एनर्जी का आंसर, ये तो पूरा कैंसिल ही हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, 10 raised to 0 is 1, खाली इसका सिंप्लीफिकेशन करो, दैट इज आंसर EV. सब कंप्लीट। Try it out orally. 6.625 into 3 is roughly 20. 4.88 को 5 ले लेंगे तो 4 से थोड़ा ज्यादा, and 4 divided by 1.6, so that will be 2.5 से थोड़ा ज्यादा, 2.6 के करीब कुछ आएगा। लेट अस सी, कैलकुलेटर से वैल्यू आने दो। ये किस तरह से मैं ओरली आपको आंसर बताता हूँ, आपको समझ में आता है? ये मेथड बहुत हेल्पफुल होता है जेडब्ल्यू नीट में। दिस विल बी 2.545। नाउ हमको क्या चाहिए? हमको 50 चाहिए। 50 क्या होगा? It is E minus K max. This will be 2.545 minus 0.380 EV. So 50 is 2 point. Two point
चेक करो ये मैच हुआ आंसर. Yes. So this completes all the questions up to 11. और फिर तो additional questions है. We can take that later on. Additional questions. And this normal में जितने होने चाहिए वो तो खत्म हो जाते. Now examples. If you already seen it and you are ready with the doubts, I will take the doubts. Otherwise one by one सारे करवाएंगे और क्या. If you have been through it and doubts are ready, तो time बचेगा हमारा. Completed. चलो मुझे फीडबैक चाहिए सबसे. अभी एटलीस्ट 30-40 स्टूडेंट्स का फीडबैक आना चाहिए कि हो गया खत्म, तो हम आगे बढ़ेंगे. यस प्लीज. अभी ओनली 11 फीडबैक हुए. 14. यस, इसका मतलब काफी लोग होते नहीं है, सेशन ऑन करके सो जाते हैं. इट्स पॉसिबल, इट्स पॉसिबल. यस. चलो अभी मानव का रिप्लाई आया, 15 हुए. व्हाट अबाउट अदर्स? कंप्लीट रिटर्न क्यों रिप्लाई? आयुष, हेली, मृणाली, देवांशी, प्राची, तनिषा, आयुषी, दीपेन, मनांशु, तो 24 हुए. यस. ऋषि, हरमीन, कशिश 27. चलो 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 जल्दी रिप्लाई दो, हो गया तो. अनिल 28. यस. ओके ओके फाइन. सो अभी 30 क्रॉस हो गया है. तो लगता तो है कि आप लोगों ने लिखा है सब कुछ और कंप्लीट हुआ है. चलो. सो नाउ एक्सरसाइज, ऑल दीज 19 क्वेश्चंस आर ओवर. 1 से 19 पूरा खत्म हो गया. और बाद में ये एडिशनल है क्वेश्चंस, तो 37 तक है, बट वो बाद में इंटरेस्टेड यूजर को एक्स्ट्रा में करवाएंगे. अभी जितना जरूरी है वो 19 सारे हो गए. नाउ इलस्ट्रेशंस पार्ट. लेट अस गो इन रिवर्स ऑर्डर. यस. ये बताओ, इलस्ट्रेशन में 7 हो गया है. ओनली 1 2 3 लेफ्ट. ओके 4 5 6 7 हो गए. गुड. ओनली 1 2 3 लेफ्ट. सो नाइस. तो चलो अभी वो समझ लेते हैं.
First illustration. Monochromatic light of frequency 6 into 10 raised to 14 hertz is produced by laser. अब मैंने जो पढ़ा उसको मैं सिंबल दे देता हूँ. This is F. The power emitted is 2 into 10 raised to minus 3, so 2 millivolt. This is P. What is the energy of photon in light beam? आज ही हमारा एक क्वेश्चन हुआ था, E पूछा है. How many photons per second are emitted by? And exactly similar. जो आज हमने किया वही है. Perfect revision. Yes. So आपको पहला जो आंसर चाहिए E का, that is HF. And get answer in joule, get answer in EV. Then N चाहिए हमको, that will be P by E. ये वॉट यानी जूल पर सेकंड में होगा और ये जूल में होगा, तो हमारा N का आंसर पर सेकंड में आ जाएगा. आवड़े बधाने इजी कंफर्म करो. बहुत इजी क्वेश्चन, स्टैंडर्ड फॉर्मेट. यस. ये कंफर्मेशन क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? So now next question. Work function is 2.14 eV. This is work function. Find the threshold frequency. So F0 find करना है. And 0.60 voltage stopping potential V0. And we have to find out wavelength of incident light, lambda how much, and F0 how much. So बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन होगा. पहले हमारे पास F0 है 2.14 eV. Make it in joule. So 2.14. That's it. F0 is 50 by H. So 2.14 into 1.6 into 10 raised to minus 19 जो जूल में है, divided by work function का ये value divided by Planck's constant. And this is joule second. Joule in 1 second यानी hertz. So ये आपको solve करना है. Something into 10 raised to minus, that will become plus, and that will be hertz. Solve करो इसको. ये आता है 0.516. तो हमारा आंसर हो जाएगा 5.16 into 10 raised to 14 hertz. That's it. 5.16 into 10 raised to 14 hertz. इतना सिंपल क्वेश्चन हो गया फर्स्ट पार्ट. अभी सेकंड पार्ट में लैम्बडा चाहिए. वो कैसे आएगा? तो इसके लिए आप पहले यहाँ पे के मैक्स EV0 that is equal to V0 है 2.60 EV हो गया. Now use that relation, Einstein वाला relation. K max is equal to E minus phi 0. So E will be equal to K max plus phi 0.
तो kmax है 0.60 and 50 है 2.14. So this will be equal to 2.74 ev. So this will be equal to 2.74 into 1.6 into 10 raised to minus 19 जूल. E का आंसर आएगा. E क्या होता है? E is hc by lambda. अगर lambda पूछा है तो yes. So therefore lambda will be hc by E. So therefore lambda will be 6.625 10 raised to minus 34 3 into 10 raised to 8 डिवाइडेड बाई E का वैल्यू हमारे पास जो है 2.74 1.6 10 raised to minus 19 and that will be in meter. So solve करो. 6.6253 is the 2.7 1.4 इस बार ये मल्टीप्लाई करेंगे so into 10 raised to minus 7 मीटर आएगा. फोर पॉइंट समथिंग कुछ आएगा. And then you can convert it into nanometer. Solve it please. एग्जैक्ट 4 आता है तो ये तो बहुत अच्छी बात है. अगर एग्जैक्ट 4 आता है तो ऐसा नहीं होगा. 4 पॉइंट. हाँ सो 453.4 नैनोमीटर. और पीछे देखते हैं आंसर. हाँ यही आया. परफेक्ट. देखो हमारा. राइट इट डाउन प्लीज. कंफर्म्ड हो गया है क्वेश्चन सबको क्लियर.
So with this, ये कौन सा सेकंड हो गया इलस्ट्रेशन, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, कंफर्म करो तो आई विल टेक यू टू थर्ड. क्यों कंफर्मेशन क्यों हो गया? इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द इक्वेशन प्रॉपरली. एक बार थियरी अच्छी तरह से समझ लिया तो न्यूमेरिकल्स आर लाइक अ गिफ्ट. एंड जो लोग ऐसा बोलते हैं कि मुझे न्यूमेरिकल में तकलीफ है, वो इसलिए क्योंकि आपने थियरी ठीक से नहीं समझा है. चलो, टेक यू टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. थर्ड. It is given what are energy of photon in EV, नहीं sorry, पहले wavelength of light in visible region is about 390 nanometer for violet color, so we call it lambda V. 550 nanometer for yellow green, so we call it average. This is lambda A for average. And 760 nanometer वाला जो बात है, that is called lambda red. Question asked is, what is the energy of photon? So EV, how much? E average, how much? And E red, how much? Then question asked is, from table of photosensitive material with work function listed in table 11.1, can you build a photoelectric device that operates with visible light? तो वो बाद में देखेंगे, पहले ये तो कैलकुलेशन समझ ले. हमको तो एनर्जी ऑफ फोटोन चाहिए, तो ये तो एनर्जी ऑफ फोटोन E, दैट इज hc by lambda. और इस तरह से आंसर आएगा, वो जूल में आएगा. डू यू वांट आंसर इन जूल? टेबल में वैल्यूज आर गिवन इन जूल और दे आर गिवन ईवी. मोस्टली मुझे जहां तक मालूम है वैल्यूज विल बी इन ईवी, सो बेटर है you make it hc by E lambda and then get answer in EV only. So use this formula 3 times. EV is hc by E lambda V. E average is hc upon E lambda average. E red is hc upon E lambda red. Solve it and get the answer. So suppose ये आंसर आया 3.19 EV, ये आंसर आया 2.26 EV और ये आंसर आया 1.64 EV. अब हमें देखना है टेबल 11.1 में. टेबल 11.1
विजिबल लाइट में ऑपरेट करे। विजिबल लाइट की वैल्यूज क्या है, 1.6 से लेकर 1.6 से लेकर, देखो हमारे पास वैल्यूज का चार्ट देखो, क्या था हमारा मिनिमम वैल्यू 1.64, मैक्सिमम 3.19। तो हम कौन कौन से एलिमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं? सो ये सिलेक्ट हो सकता है, ये सिलेक्ट हो सकता है, ये सिलेक्ट हो सकता है। बट अगर तीनों के लिए चाहिए, एंटायर स्पेक्ट्रम के लिए वो ऑपरेट कर, ऐसा हमको चाहिए, देखो तो भी सिलेक्टिविटी आएगा। सीसीएम है वो कुछ लाइट के लिए चलेगा, सोडियम भी कुछ लाइट वेवलेंथ के लिए चलेगा, पोटेशियम भी कुछ वेवलेंथ के लिए चलेगा। कैल्शियम तो यूज ही नहीं कर सकते क्योंकि 3.19 इज द हाईएस्ट दैट वी आर गेटिंग, एंड ये तो 3.20 है। सो ये नीचे के तो जो एलिमेंट्स है ये सब तो वैलिड ही नहीं होंगे। और इसमें भी आपका लाइट का कलर और वेवलेंथ देख के आप सीजियम, पोटेशियम, सोडियम सिलेक्ट कर सकते हो। एबल टू अंडरस्टैंड? नाउ लेट अस सी द आंसर। ये मैंने समझा दिया, अब हम बुक में देखते हैं क्या आंसर गिवन है। आई विल टेक हेल्प ऑफ वॉलंटियर टू रीड इट। अंश देयर ना? Yes, sir. यस अंश, रीड करो। Yes, sir. Sir, B वाला? डी पार्ट, डी पार्ट। Yes, sir. For a photoelectric device to operate, we require incident light energy E to be equal or greater than work function phi 0 of the material. Thus, the photoelectric device will operate with violet light with E equals to 3.19 eV, photosensitive material Na with phi 0 equal to 2.75 electron volt, K with phi 0 equal to 2.30 electron volt, and cesium with phi 0 equal to 2.14 electron volt. It will also operate with yellow-green light with E equals to 2.26 electron volt for cesium with phi 0 equal to 2.14 electron volt only. However, it will not operate with red light with E equals to 1.64 eV for any of these photosensitive materials. ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड इट? चलो फिर से ले जाके समझा देता हूँ। देखो वैल्यू लिख के रखते हैं बाजू में। हमारा एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ रेड कलर इज 1.64 eV, एवरेज वो समथिंग 2.66 eV ऐसा कुछ था, एंड वायलेट में 3.19 eV। तो आप देख सकते हो कि ये तो कहीं पे यूज नहीं होगा क्योंकि इससे छोटा तो कोई है ही नहीं वर्क फंक्शन। तो रेड लाइट थी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिलेज नहीं। कंसेप्चुअली क्लियर हो गए? अब एवरेज वैल्यू से कौन कौन सा चलेगा, वो ग्रीन और जो एवरेज में, तो एवरेज में ये दोनों आएंगे क्योंकि वो से ग्रेटर होंगे, पर सोडियम में नहीं चलेगा। एंड वायलेट की बात करोगे तो ये तीनों चलेंगे। ठीक है? और इसके आगे के जो है ये तो सब होंगे ही नहीं, नॉट पॉसिबल, जो मैं आपको बताया था। सो दिस कंप्लीट्स द इलस्ट्रेशंस आल्सो। इलस्ट्रेशन हो गए, आंसर न्यूमेरिकल हो गए। नाउ इट्स द टाइम फॉर एमसीक्यू। यस, असाइनमेंट। आई हैड शेयर्ड इट यस्टरडे ओनली। क्या शेयर किया पता नहीं, बट शेयर कर दिया। चलो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग इट नाउ। ये तो पूरा आपके पार्टिसिपेशन से जाएगा, इसमें मेरा रोल रहेगा मॉडरेटर का। यस प्लीज, वे रिक्वायर्ड आई विल इंटरव्यू, अदरवाइज आप लोग ही पार्टिसिपेट करो, मुझे अच्छा लगता है।
चलो वॉलंटियर 1 by 1. टोटल क्वेश्चंस है 35. सो आज और कल मिला के हो जाना चाहिए कंप्लीट, खत्म, कुछ इसमें बड़ी बात नहीं. लेट अस गो इन रिवर्स ऑर्डर. यस, 35 में कौन कंट्रीब्यूट करेगा? देखो ये पॉइंट है और इधर ये पॉइंट है. सो इस पॉइंट को ये 1 एंड 2. सो पॉइंट 1 से आपको क्या समझ में आया? पॉइंट 2 से क्या समझ में आया? आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये क्लियर हो रहा है? ए एंड बी जो ग्राफ के पोर्शंस है, दे एंड अप एट द सेम पॉइंट. दैट मीन्स उनका स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है. सो ऐसा समझ में आना चाहिए. V0A is V0B. So we can say FA equal to FB. कि स्टॉपिंग पोटेंशियल किसका फंक्शन होता है? फ्रीक्वेंसी का. यस. तो FA इक्वल टू FB तो राइट हो गए. तो FA इक्वल टू FB वाले ये दो है, वो दोनों राइट है. एंड देन इंटेंसिटी में आप देखो, ये लाइन इंटेंसिटी का है. वी गेट इट सेम फॉर IB एंड IC. तो IB एंड IC है, बट IA और IB सेम नहीं है. तो ये नॉट इक्वल टू IB. ये रॉन्ग हो गया, राइट हो गया. तो 35 में ऑप्शन ही आएगा. राइट इट डाउन. मेथड के साथ लिखो पूरा. Understood this question number 35? Yes, please. Confirm it, then we take 34th question. Reply in chat or give voice reply. Phi 1 is 2.5 eV. Phi 2 is 5 eV. And we want ratio of threshold frequencies.
f01 upon f02 क्या होगा? Simple. f01 upon f02 is 501 upon 502. So 2.5 1 by 2. That's D. Very easy. Understood it. Now 33. Ratio of D Broglie when of an atom of nitrogen gas at 200 K and 1500 K is dash. This is M. This is T1. This is T2. And this is P. This will be atmospheric pressure. Atom नहीं atmospheric pressure. Now use the relation. Lambda is H upon under root of 3m kBT. क्या ऐसा कुछ equation याद है? What was the equation? So from that we get lambda proportional to 1 upon root T. ये तो सब constant होगा. So lambda 1 upon lambda 2 equal to root of T2 by T1. So that will be root of 1500 K upon 200 K. Solve it, get the answer. This will be root of 7.5 upon 1. So मेरे ख्याल से एक ही आंसर सेट होगा. पार्टिसिपेट करते तो अच्छा था. अब लोग नहीं पार्टिसिपेट कर रहे तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ. टाइम वेस्ट तो नहीं कर सकते. यस, आई वुड हैव बीन वेरी हैप्पी इफ यू आर सॉल्विंग इट. 32 को ट्राई करेंगे. बहुत इजी है. बोलो. $32 number then. What will be its de Broglie wavelength after 20 seconds? Proton का है. So पहले तो falling freely. V is V0 plus 80. So V0 0 and G का value 29.8 and time 20 seconds. This is 196. Now you want to find out de Broglie wavelength. So lambda is H upon P, H upon MV. So this will be 6.62, 10 raised to minus 34, 1.6, 10 raised to minus 27, and 196.
Correct. Sorry, इसको. Get the answer. Give me the answer. What is the answer that you are getting?
गेट द आंसर प्लीज, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपका खुद का डी ब्रोगली वेवलेंथ फाइंड करना है। इससे बेहतर तो क्वेश्चन ही नहीं हो सकता ना। अल्लू सिंपल क्वेश्चन, लैम्बडा इज h by p, h by m भी करके सॉल्व करो, खत्म। बी क्विक प्लीज। सिक्सटी थ्री का 180 से खाली डिवाइड करने का। थ्री पॉइंट सिक्स एट इंटू 10⁻30 पावर में 2 लेस हो जाएंगे। यस, प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइड बाय 180 करो, आंसर मिल जाएगा। Exactly, so nice, perfect, so nice, thank you। कल कंप्लीट करेंगे बाकी के 1 to 30, आप लोग खुद ट्राई कर लोगे, मुझे खाली डाउट से सॉल्व करने पड़ेंगे, दैट विल बी बेटर। बाय बाय। यस, well that's correct।